आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन हांची पक्षाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष निवड जाल्या। अरावली पर्वतरांगेत आशिल्ल्या कुंभलगड वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण दृश्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हूण घोषीत केला। भारतीय रेल्वेच्या वन स्टेशन वन प्रोडक्ट येवजणेक लागून 1 लाख मायज कारागिरांक फायदो जाला। केंद्र सरकारान केंद्रीय मोटार वाहन वित्तीय दुरुस्ती नियम 2026 अधिसूचित केला। भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मदीं 5 मॅचीची T20 माळ आयच्यान सुरू जाता। आतां पुराय खबरो भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन हांची पक्षाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष निवड जाल्या। पक्षाचे राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी डॉ के लक्ष्मण हांणी काल नवी दिल्लींत भाजप मुख्यालयान नबीन हांच्या नियुक्तीची घोषणा केली। भाजपचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंग, JP नड्डा आनी नितीन गडकरी हांणी नबीन हांकां परबीं दिली। ह्या वेळार नबीन हांकां परबीं दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें, नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज AI के भी एक्टिव यूजर है। नबीन हांकां परबीं दितना केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी म्हळें, नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में पर्यावरण रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान अरावली पर्वतरांगेंत आशिल्ल्या कुंभलगड वन्यजीव अभयारण्याक पर्यावरण दृश्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हूण घोशीत करपी अधिसूचना जारी केल्या। पर्यावरण रान आनी हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान म्हळां, हाका लागून ह्या वाठारांतल्या वनस्पत आनी रानवटी वन्यजीवांचें संरक्षण करपाक मदत जातलीच, पूण थळाव्या समुदायाकूय आदार मेळटलो। कुंभलगड अभयारण्याचो 1 किलोमिटराचो परिसर साबार वन्यजीव प्रजाती खातीर नैसर्गिक अधिवास आशिल्ल्याचें तांणी म्हळें। सेंद्रीय शेती सारकिल्या पर्यावरणाक अनुकूल आनी समुदाय केंद्रीत यत्नांक चालना दितले अशें यादव हांणी सांगलें। भारत आनी युरोपीय संघ मुक्त वेपार कबलात करपाच्या उंबरठ्याचेर आसा अशें युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डर लायन हांणी सांगलां। तांणी ह्या कबलातीचें वर्णन सगळ्या कबलातींची जननी अशें केलें। स्वित्झर्लंडांतल्या दावोस शारान काल संवसारीक अर्थीक मंचांत उलयतना दावोसा उपरांत फुडल्या सप्तकाचे अखेरेक भारताक भेट दितली अशें लायन हांणी सांगलें। पूण हे बाबतींत अजूनय काम उरलां अशें तांणी मुखार म्हळें। हाका लागून 2 अब्ज लोकांची बाजारपेठ तयार जातली, जो संवसारांतल्या GDPचो सुमार 1/4 वांटो आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें। युरोपीय कावन्सिलाचे अध्यक्ष आंतोनियो कॉस्टा आनी लायन 25 ते 27 जानेर मेरेन भारत भोंवडेर येतलीं। अंदूच्या प्रजासत्ताक दिसाच्या कार्यावळींत ती मुखेल सोयरी आसतली। तशेंच भारत युरोपीय संघ शिखर परिशदेची ती सह अध्यक्षता करतली। भारतान अंदू 16 ते 20 फेब्रुवारी मेरेन नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमान AI इम्पॅक्ट समीट जातलें। ग्लोबल सावथांतली ही पयली जागतीक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स परिशद आसतली। ह्या परिशदेंत जागतीक फुडारी, धोरणकर्ते, तंत्रज्ञान कंपनी, नवनिर्माण करपी आनी तज्ञ एकठांय येवन शासन, नवकल्पना आनी शाश्वत विकास ह्या क्षेत्रांतली AIच्या परिवर्तनकारी क्षमतेचें प्रदर्शन आनी ताचेर सखोल चर्चा करतले। थळाव्या शिल्प कौशलाक चालना दिवपा खातीर आनी शाश्वत उपजिविका निर्माण करपा खातीर भारतीय रेल्वेची 1 स्टेशन 1 उत्पादन येवजण एक म्हत्वाचो उपक्रम म्हणून उदेला। रेल्वे मंत्रालयान म्हळां, ही येवजण 2000 मायज रेल्वे स्थानकां मेरेन विस्तारीत केल्या, जाका लागून 1,32,000 मायज कारागीर, विणकार आनी ल्हान उत्पादकांक फायदो जाला। वेपार आनी संस्कृताय हांचो मेळ घालून रेल्वेन स्टेशनांचें रुपांतर थळाव्या उद्देगांच्या केंद्रांत केलां अशें मंत्रालयान सांगलें। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट उपक्रम समुदायाक सशक्त करून आनी भारताची गिरेस्त पारंपारीक कारागिरी तिगोवन दवरून वोकल फॉर लोकलाची भावना प्रतिबिंबीत करता। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी।
कम टैक्स ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन जीएसटी। राष्ट्रीय महामार्गावेल्या टोल प्लाझांचेर वापरकर्ता शुल्क भरपा विशींची अनुपालन व्यवस्था आनीकूय घटमूट करपा खातीर केंद्र सरकारान केंद्रीय मोटार वाहन द्वितीय दुरुस्ती नियम 2026 अधिसूचित केला। वापरकर्ता शुल्क भरपाचे अनुपालन सुदारप, इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाची कार्यक्षमता वाडप आनी राष्ट्रीय महामार्गावेल्या टोल चुकवेगिरीक आळो घालप हो ह्या दुरुस्त्यांचो हेत आसा। रस्तो येरादारी महामार्ग मंत्रालयान सांगला ह्यो दुरुस्त्यो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाक पारदर्शक आनी तंत्रज्ञानाचेर आदारिल्ली टोलिंग पद्दत तयार करपाक मदत करतली आनी देशभरांतल्या राष्ट्रीय महामार्ग जाळ्याची शाश्वत उदरगत आनी देखरेखींतूय योगदान दितली। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आज कर्नाटकाक भेट दितले। ते टुमकुरून श्री सिद्धगंगा मठान श्री शिवकुमार महास्वामीजींच्या 7व्या स्मृती दिन कार्यावळीन मुखेल सोयरेन हाजीर आसतले। उपराष्ट्रपती बेंगलोरान CMR इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या रौप्य महोत्सवी कार्यावळींतूय हजर रावतले। वेंचणूक आयोगान खाशेल्या सघन सुदारणा सुरू आशिल्ल्या राज्यांनी आनीक 22 रोल निरीक्षकांची नेमणूक केल्या। तातले 11 नवे नियुक्त निरीक्षक अस्तंत बंगालांत आसात, जाका लागून राज्यांतल्या रोल निरीक्षकांचो आंकडो 20 जाला। ह्या निरीक्षकांनी खंयचोय पात्र मतदार वगळचो ना आनी खंयचीच अपात्र नांवां वळेरेंत जोडची ना हाची खात्री करतले। भाजपचे अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी येता त्या केरळा विधानसभा वेंचणुके खातीर विनोद तावडे हांची वेंचणूक प्रभारी म्हणून जाल्यार शोभा करंदलाजे हांची वेंचणूक सहप्रभारी नेमणूक केल्या। मजगतीं नबीन हांणी येता त्या तेलंगणा नगरपालिका आनी महानगरपालिका वेंचणुके खातीर आशीष शेलार हांकां वेंचणूक प्रभारी आनी रेखा शर्मा आनी अशोक परणामी हांची वेंचणूक सहप्रभारी म्हणून नेमणूक केल्या। केंद्रीय संचालन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी काल नवी दिल्लींत चालू अर्थीक वर्साच्या तिसऱ्या तिमाहींतल्या BSNLच्या कामगिरीचो नियाळ घेतलो। बसके वेळार मंत्र्यांनी मोबायल नेटवर्क उपलब्धताय आनी मीन टायम टू रिपेर सयत सेवा दर्जाच्या मुखेल मापदंडांचो नियाळ घेतलो। मोबायल बेस्ड ट्रान्सिव्हर स्टेशनांत तिमाही दर तिमाही म्हत्वाची सुदारणा दाखोवपी जायत्या दूरसंचार मंडळांच्या कामगिरीची तांणी दखल घेतली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी काल राष्ट्रीय राजधानी वाठारांतले रोहतक, मानेसर, पानीपत आनी कर्नाल ह्या वाठारांतली वायू प्रदुशणाक तोंड दिवपा खातीर कृती येवजणांचो सविस्तर नियाळ घेवपा खातीर एका बसकेची येजमानकी चलयली। राष्ट्रीय धरण सुरक्षा समितीची 11वी बसका काल नवी दिल्लींत जाली। ह्या बसकेंत ह्या समितीचे अध्यक्ष अनुपम प्रसाद हांणी फाटल्या 4 वर्सांत राष्ट्रीय धरण सुरक्षितताय प्राधिकरणाच्या कामगिरीचेर भर दिलो। तशेंच धरण सुरक्षेच्या मळार आव्हानां सोडोवपा खातीर NCDSन हातांत घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांचेरूय तांणी भर दिलो। भारतीय हवामान खात्यान IMDन फुडले 2 दीस हरियाणा, पंजाब आनी चंदीगडांत सकाळीं आनी रातच्या वेळार दाट धुकें पडटले असो अदमास उक्तायला। आज हिमाचल प्रदेशांत कुडकुड्याचे शीं पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां। खेलो इंडिया शिंयाळी खेळ 2026 काल लेहच्या NDS स्टेडियमांत सुरू जाले। उक्तावण सुवाळ्याक लडाखचे नायब राज्यपाल कविंदर गुप्ता हाजीर आशिल्ले। भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मदीं 5 मॅचीची T20 माळ आयच्यान सुरू जाता। पयली T20 मॅच आज नागपूरच्या विदर्भा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमांत सांजवेळ 7 वरांचेर सुरू जातली। निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन हांची पक्षाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष निवड जाल्या। अरावली पर्वतरांगेन आशिल्ल्या कुंभलगड वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केला। भारतीय रेल्वेच्या वन स्टेशन वन प्रोडक्ट येवजणेक लागून 1 लाख मायज कारागिरांक फायदो जाला। केंद्र सरकारान केंद्रीय मोटार वाहन द्वितीय दुरुस्ती नियम 2026 अधिसूचित केला। भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मदीं 5 मॅचीची T20 माळ आयच्यान सुरू जाता। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30।